हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम P220 रिले का डिटेल वायरिंग्स देखेंगे। जैसे कि आप सामने से देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड रियर व्यू ऑफ द रिले है। तो ये P220 रिले का जो फ्रंट में आप देखिएगा, जो रिले का मॉडल लिखा गया, सीरियल नंबर लिखा गया एंड ऑक्सिलरी वोल्टेज 24 to 250 वोल्ट डीसी एंड 48 to 240 वोल्ट एसी है। और करंट सिटी रेटिंग इधर 1 एम्पियर और 5 एम्पियर दोनों लिखा गया है। उसके बाद इसके नीचे में देखिएगा, जैसे बैटरी का सप्लाई के लिए ये एक प्रोविज़न रखा गया है जहाँ पे हम बैटरी लगा सकते हैं। जब हम ऑक्स पावर नहीं दे पाएंगे तो उसके रिले को इंटरनली सप्लाई देने के लिए, एज वेल एज ये 9 पोर्ट RS232 का है, जिससे हम लोग लैपटॉप के साथ इस रिले को कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम फ्रंट एंड। सिमिलरली इफ यू विल see the rear end there are terminals from 1 to 56। ऐसा ही वायरिंग हमने P122 रिले में भी प्रीवियस वीडियो में देखा था। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि इसका जो चौड़ाई है आज कंपेयर टू P122 ये ज़्यादा है, बट द नंबर ऑफ टर्मिनल्स आर सेम है। अगर हम रियर पोर्ट में कम्युनिकेशन की बात करें तो जो ये 29, 30, 31, 32 है, इसमें 30, 31, 32 जो टर्मिनल है, तो उस टर्मिनल में हम लोग RS485 के द्वारा रियर एंड में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो ऑक्स सप्लाई यूज होता है वो 33 एंड 34 में। तो अभी हम इसके डिटेल स्टडी करेंगे। बिफोर दैट, अर्थिंग ऑफ द केसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो द सिंबल इज देयर एंड ऑल्सो यू आर सीइंग दैट द रिले इज ग्राउंडेड, द वायर इज कनेक्टेड हियर एंड वी कैन कनेक्ट इट टू द अर्थिंग पार्ट. So let us jump into the detailed wiring schemes. So this is the view of MiCOM P220 relay. अगर आप इसके डायग्राम को देखेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम जो वायरिंग डायग्राम है वो इस तरह से कुछ है, जिसपे ऑक्सिलरी सप्लाई जो है हमने पहले बोला था कि 33 एंड 34 में है, जिसपे AC और DC दोनों दिया जा सकता है, जो रेंज नेम प्लेट में लिखा गया था उस रेंज। और आप देखना चाहेंगे तो अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो 33 में पॉजिटिव एंड 34 में नेगेटिव दे सकते हैं। उसके बाद हम अगर सिटी की बात करें तो सिटी का सप्लाई आपको बता दूं कि 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कोई भी रेटिंग का सिटी सेकेंडरी हो दैट कैन बी फेड। 1 एम्पियर के लिए टर्मिनल 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55, 56 तक है, जिसपे 49 से लेके 54 तक फेज सिटी आप लगा सकते हो। आर फेज फॉर 4950, वाई फेज फॉर 5152, बी फेज फॉर 5354 एंड सीबी सिटी विल बी कनेक्टेड इन 5556. दिस कनेक्शन इज फॉर 1 एम्पियर सिटी सेकेंडरी रेटिंग. जब हम 5 एम्पियर की बात करेंगे तो द टर्मिनल 41 से 48 है, उसको हम लोग यूज कर पाएंगे अगर हमारा सिटी का जो रेटिंग है सेकेंडरी का वो 5 एम्पियर का है. सिमिलरली जो हम कम्युनिकेशन की बात किए थे रियर एंड में, RS485 का कम्युनिकेशन है, जो 30, 31 एंड 32 आर द टर्मिनल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर RS485 कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट. अगर आगे जाएं तो इसमें बाइनरी इनपुट एंड आउटपुट से P122 रिले में हमने देखा था उस पर 3 DO और प्रोग्रामेबल इनपुट था, लेकिन इस पे 5 बाइनरी इनपुट से प्रोग्रामेबल एंड उसमें 6 डिजिटल आउटपुट्स था, लेकिन इसमें 5 डिजिटल आउटपुट है जो RL1 से RL5 है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल वायरिंग देखेंगे. तो जैसे मैंने आपको सिटी का कनेक्शन बताया था, जो 5 एम्पियर का रेटिंग था, वो फॉर फेज एंड सीबी सिटी कनेक्शन टर्मिनल 41, 42, 43, 44, 45, 46 आर फॉर फेज सिटी, 47 and 48 for CB city. So for connection establishment for the 5 ampere CT, we have to sort 42, 44, 46 and we will connect the main CT's secondary S2 sorting part in this 42, 44 or 46 either of the terminal, and the CBCT will be directly terminated at 47 and 48. This is regarding 5 ampere CT input. We will be jumping to 1 ampere CT input for phase 1 ampere. The terminals 50, 52 and 54 will be shorted as shown in the diagram. Terminal 50, terminal 52, terminal 54 इनको शॉर्ट कर दिया गया है, और 49, 50 में R फेज, 51, 52 में Y फेज,
53-54 में बी फेज लगाया जा सकता है, और 55-56 इज डेडिकेटेड फॉर CBCT, which after connection the ratios will be configured for phase CT and CBCT, and phase current protection and ground fault protections will be settings will be uploaded as per the required scheme. Next, जैसे कि मैंने बोला था कि there are 5 digital inputs whose terminals are like L1, L2, L3, L4, L5. L1 जो digital input 1 है, that is 22, 24. 22 is positive, 24 is negative. For DI2, L2, 26 is positive, 28 is negative. For DI3, L3, 13 is positive, 15 is negative. For DI4, L4, 17 is positive, 19 is negative. For DI5, L5, 21 is positive and 23 is negative. This is all about the digital programmable inputs. Coming to the digital outputs, apart from watchdog, there are 5 digital outputs in the relay named RL1, RL2, RL3, RL4, RL5. Watchdog is the terminal 36, 37 and 35, where 36 and 37 are the NC contacts, 36 and 35 are the NO contacts. So the relay, if internally it is healthy, we can give that healthiness report to the SCADA or DCS through the watchdog contact. And regarding all the 5 digital changeover contacts RL1 to RL5, there are 5 changeover contacts in the relay. The NO, NC and the common part is here illustrated. So regarding common part, just like RL1, 2 is the common part, and for NC connection we can use the terminal 4 and terminal 6 for NO. Similarly for RL2, 8 is the common part, 10 can be used for NC and 12 will be used for NO. For DO3, RL3, 14 is the common, 16 is NC, 18 is NO. For DO4 or RL4, 1 is common, 3 is NC, 5 is NO. For DO5 of RL5, 7 is the common, 9 is NC and 11 is the NO. This is all about the digital programmable outputs. P220 relay जो है basically it is utilized for motor protection schemes. So the DI and DO, like 5 DI and 5 DOs, we can configure as per our requirement. One drawback of the P220 relay is we cannot have any voltage or PT secondary wiring in the relay. So for under voltage tripping of the motor, we can use the contacts of the bus PT protection relay and we can give them as an input. As you seeing in the L3, under voltage input has been given from bus PT protection relay to this relay, and we can generate one output for under voltage opening of motor circuit breaker. Next, so as P220 is responsible for motor protection, so we are showing here the number of protections, various types of motor protection like short circuit protection, earth fault protection, excess long start protection, mechanical jam protection, thermal overload protection, unbalanced protection, differential protection. For differential protection, we have to install a separate relay that may be any summation relay whose overcurrent function can be used as differential element particularly. So as here, as we have only one phase CT connection, that is we do not have provision for 2 CT connections. So motor protection CT, you can say phase and neutral CT are get summed up, and the wires have been installed in the different relay for motor differential protection. So this is all about P220 relay wirings. Thank you very much.